Hello everyone, welcome back to today's class. This is the fifth lecture for the chapter electricity. So let us begin. In this lecture, let us study about combination of resistors. In various electronic gadgets or electronic instruments, we use a large number of resistors, different types of resistors and also large number of resistors. So how are these resistors joined together? How are they connected? So to join the resistors, there are two methods. Okay, so we can connect the resistors, different types of resistors together by two methods. One is the series method and the other is the parallel method. So in this lecture, we will be concentrating on resistors joined in series. So what is series connection and how does it work? Let us begin. Series connection is the connection in which the resistors are connected end to end. We have three resistors R1, R2 and R3. How are they connected? This is the first resistor R1. Where it ends, जहां पर ये end हो रहा है, वहीं से सेकेंड रेजिस्टर कनेक्टेड है. सो जहां फर्स्ट रेजिस्टर का एंड है, वहां सेकेंड रेजिस्टर की बिगिनिंग है. ओके, फिर जहां पर R2 एंड होता है, वहां से R3 कनेक्टेड है. सो दिस इज एन एंड टू एंड कनेक्शन. सो दिस एंड टू एंड टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज series connection. So when the resistors are connected in this way, they are joined together in this way, we say that the resistors are connected in series. Okay, so this type of connection is series connection. Now this is a circuit. This is a circuit diagram. ये एक बैटरी है. This is a 6 volt battery. Key and an ammeter. ठीक है, ammeter measures the current. So now what we do is कि हम क्या करेंगे, first thing हम ये करेंगे कि we change the position of the ammeter. ठीक, हम एमीटर की पोजीशन चेंज करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया कि एमीटर को यहां कनेक्ट किया और हमने रीडिंग नोट की. तो हमें कुछ करंट मिला I से 10 एम्पियर. ओके, फिर इसके बाद हमने एमीटर को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया और हमने एमीटर कनेक्ट किया यहां नियर द R1 रेजिस्टर. ओके, जब हमने एमीटर को यहां कनेक्ट किया तब हमने फिर करंट नोट किया. तब भी करंट की वैल्यू थी 10 एम्पियर. ओके, फिर हमने एमीटर को कनेक्ट किया यहां. फिर हमने करंट नोट किया तो यहां भी करंट वाज 10 एम्पियर. Then we disconnected the ammeter from here और हमने इसे यहां कनेक्ट किया. फिर हमने करंट नोट किया, करंट अगेन वाज 10 एम्पियर. मतलब कि हम एमीटर की पोजीशन जहां भी रखे इन द एंटायर सर्किट, द करंट रिमेन्स सेम. सो कंक्लूजन क्या है कि थ्रू आउट द सर्किट, through all the resistors, the current is always same. मतलब पूरे सर्किट में सीरीज कनेक्शन में करंट सेम है. ठीक है, जितना करंट यहां से गया, ये आई करंट कहां से कहा जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये आई करंट बैटरी से गया तो इतना ही आई करंट R1 में जाएगा. द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू R2 and the same amount of current will go through R3. तो वही I करंट R1 में जाएगा, वही I करंट R2 में जाएगा. I करंट will go through R3 and I करंट will return back. ठीक है, तो मतलब करंट जो है वो एंटायर सर्किट में क्या रहता है, सेम. सो करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टर इज सेम. करंट remains same through each resistor. ठीक है, करंट हर एक रेजिस्टर में सेम रहता है, विच इज इक्वल टू द टोटल करंट. ठीक है, जो टोटल करंट है वही करंट R1 में है, वही करंट R2 में है, वही करंट R3 में है. ओके, सो द करंट रिमेन्स सेम
throughout the circuit in series connection. This is an important point. ठीक है, ये एक important point है कि करंट entire circuit में क्या रहेगा, सेम. Okay. Now second thing which we do is, हम यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. से दिस इज A and say this is B. ठीक है. Now what we do is we connect a voltmeter across AB. ठीक है, हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया across AB in parallel. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स. ठीक है, तीनों रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को मिला के जब हमने एक वोल्टमीटर लगाया तो हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स. ठीक है, तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया टोटल रेजिस्टर्स का. ठीक है, टोटल तीनों का मिला के. तो हमें क्या मिल गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं बाय कैपिटल V. तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब हमने क्या किया कि किसी ने बोला कि नहीं यार हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो सबका इंडिविजुअल चाहिए. तो ठीक है, इंडिविजुअल देख लेते हैं. तो फिर हमने क्या किया कि वोल्टमीटर यहां से हटा दिया, निकाल दिया. हमने इंडिविजुअली हर एक के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट किया. ठीक है, फ्रॉम A टू B. फ्रॉम A टू B हमने इंडिविजुअली तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट किया. तो जब हमने ये वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो R1 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला, R2 के अक्रॉस हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला V2, एंड R3 के अक्रॉस भी हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला V3. ठीक है, तो हमें तीन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिले. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर. हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिला, सेम नहीं मिला. एमीटर जब हम कर रहे थे कनेक्ट R1 R2 R3 में करंट, तो हमें सबकी रीडिंग 10 एम्पियर एक जैसी मिल रही थी. लेकिन जब हमने वोल्टमीटर हर एक के अक्रॉस कनेक्ट किया तो हमें हर एक के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, अलग अलग मिला. इसके अक्रॉस कुछ 1 वोल्ट मिला, इसके अक्रॉस हमें कुछ 2 वोल्ट मिला, इसके अक्रॉस हमें कुछ 3 वोल्ट मिला. तो ऐसे सब के अक्रॉस हमें अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिला. ठीक है, लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या हुआ कि जब हमने V1, V2 और V3 जो हमें तीन पोटेंशियल डिफरेंस मिले हैं, जब हमने उनका सम किया, टोटल किया, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला V. और V क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने एक सिंगल वोल्टमीटर लगाया था AB के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें तब मिला था वो हमें ऐसे मिला. मतलब से कि V जो है वो था 6 वोल्ट. जब हमने AB के अक्रॉस एक सिंगल वोल्टमीटर लगाया था तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज 6 वोल्ट. तो जब हमने V1, V2, V3 को कंबाइन किया, से V1 हमें मिला 1 वोल्ट, V2 हमें मिला 2 वोल्ट और V3 हमें मिला 3 वोल्ट. तो जब हमने इन तीनों को कंबाइन किया, ऐड किया, तो हमें वापस से क्या मिल गया, 6 वोल्ट. और 6 वोल्ट क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने एक वोल्टमीटर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया था तो उस टाइम पे हमें जो वोल्टेज मिला था वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन तीनों का सम करने पे वापस मिल गया. ठीक है, सो द कंक्लूजन वाज कि जब हम V1, V2, V3 को ऐड करते हैं तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मिल जाता है. ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस, कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस is equal to the sum of the individual potential difference across each resistor. ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, that is equal to the sum of individual potential difference across each resistor. V equals to V1 plus V2 plus V3. So V is the total potential difference. Now the current remains same throughout the circuit through each resistor. मतलब जो total current है और जो individual current है in each resistor, वो दोनों की values जो है वो क्या है, same. Means the total current is I and the individual current through each resistor, that is also I, because the current remains same throughout the circuit. So these are the two major conclusions which we can make from this activity. Now keeping in mind these two conclusions, we move on to the derivation for the total resistance in series combination. Okay, so now we will calculate total resistance or equivalent resistance in series combination. Okay, so this is a circuit in series combination. This is R1, R2 and R3. Now we need to find the total resistance for this circuit. Okay, हमें R1, R2 और R3 तीनों को कंबाइन करके एक टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, मतलब क्या है कि R1, R2 और R3 जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि इन तीन रेजिस्टर्स को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर लगा दें ऑफ द सेम वैल्यू. ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा, लेट अस डिनोट इट बाय आर इक्यू. दिस इज नोन एज आर इक्विवेलेंट एंड दिस टोटल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, so now applying Ohm's law, to the entire circuit total. ठीक है, तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, so we need to have total potential difference and total current for the entire circuit. अगर हम लगा रहे हैं पूरे सर्किट के लिए, तो अगर हम पूरे सर्किट को साथ में लेंगे एक साथ, तो हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे and we will take the total potential difference and total current. So for the entire circuit, V equals to I into R equivalent. इसमें हमने सारी चीजें जो टोटल है वो ले ली, क्योंकि हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं. तो हम पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है टोटल करंट वो ले लेंगे एंड टोटल रेजिस्टेंस. ओके, ये हो गया फॉर द एंटायर सर्किट. Now second, for individual resistors, applying Ohm's law for individual resistors. ठीक है, मैं यहाँ Ohm's law लिख देती हूँ. Ohm's law is V equals to IR. This is the Ohm's law for individual resistors. So for R1, okay, हम Ohm's law apply करते हैं for R1. We know that the current in the entire circuit is I. Total current is also I, and the individual current through each resistor is also I. We know that the resistance
R1 across the first resistor. And we know that the potential difference across R1 is V1. The potential difference across R2 is V2 and the potential difference across R3 is V3. We have already studied this. So potential difference across R1 is V1 equals to current across R1 is I and resistance across R1 is R1. So for individual resistors, for first resistor V1 equals to I R1. Now for the second resistor, potential difference is V2, current is I, resistance is R2. And for the third one V3 equals to I R3. This is equation 1 and these are equation 2. And this one, say this is equation 2, this is 3 and this is 1. Now substituting the values of equation 1 and equation for equation 2 and equation 3 in equation 1. Substituting 2 and 3 in 1. In equation 1. So what do we get? In place of V, we have V equals to V1 plus V2 plus V3. In place of V, we substitute I R equivalent equals to. In place of V1, we substitute I R1. In place of V2, we substitute I R2. And in place of V3, we substitute I R3. Okay. Now, तीनों में आई है, so I को हम कॉमन ले लेंगे. Okay. I and I gets cancelled from both the sides. We remain with the formula for R equivalent, which is equals to R1 plus R2 plus R3. This is the equivalent resistance for series connection. Okay. So for example, if the value for R1 is 5 ohm, if the value for R2 is 6 ohm, and if the value for R3 is 2 ohm, so the equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3, which is 5 plus 6 plus 2, which is equal to 13 ohm. So this is how we calculate equivalent resistance for resistors in series combination. Okay, so from this we can conclude that the equivalent resistance is always greater, has a value which is always greater than that of any of the resistor. See, 13 ohm is greater than 5 ohm, 6 ohm and 2 ohm. So equivalent resistance in series combination is always greater than that of any of the individual value of any of the individual resistors. Okay. Now let us do a numerical for this so that we can understand it better. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Okay. There is a resistor of 4 ohm and an electric lamp. They are all connected to a battery. Resistor is of 4 ohm and the electric lamp, it is 20 ohm and the battery is of 6 volt. Okay. Calculate the total resistance of the circuit.
Now we need to calculate the total resistance of the circuit. So this is the resistor 1 R1 and this is R2. Okay, both are connected in series, end-to-end connection. So equivalent resistance will be equal to the sum of the two R1 plus R2. This is the formula for equivalent resistance. ठीक है, equivalent resistance में क्या होता है, जितने भी resistors हैं उन सब के resistance direct add हो जाते हैं. So R1 plus R2. Equivalent resistance will be 4 ohm plus 20 ohm, which is equal to 24 ohm. This is the value for equivalent resistance. Okay. Now in the next part of the question, we need to find the current in the circuit. Okay. So now this is the first part. Second part, we need to find the current in the circuit. So how do we calculate the current in the circuit? We know the formula V equals to IR. Okay. Total potential difference equals to total current into total resistance. So the total potential difference for the entire circuit is 6 volt, because that is the potential difference of the battery. So 6 is equal to I we need to calculate, and the total resistance or the equivalent resistance is 24. So the value of I is 6 upon 24, which is equal to 0.25 ampere. Okay, so this is the second part, and the third part of the question says the potential difference across the electric lamp and the conductor. Third part, it says we need to find out the potential difference across the lamp and the conductor. Okay, we need to find out V1 and V2. As we know that the current across each resistor is equal to the total current. We have already calculated the total current. Okay, that means the current through R1, current through R1 will be equal to current through R2, which will be equal to 0.25 ampere. As we have already studied that the total current is equal to the individual current in the resistors, through the resistors. So same 0.25 ampere current will flow through R1 and the same 0.25 ampere current will flow through R2. Okay. So now calculating V1. V1 will be equal to IR1. So V1 is equal to I is 0.25 and R1 is 4. Okay. So this will be 1 volt, the value of V1. Calculating V2, which is equal to IR2. I is 0.25 and R2 is 20. Okay, and this will be equal to let us do here. V2 equals to IR2. V2 is equal to 0.25 into 20, which is equal to 5 volt. Okay, so these are the individual values for V1 and V2. From this you can see when we add V1 and V2, that is 1 plus 5, we get 6 volt, which is the total potential difference which we have already taken. Okay, so this is all about resistors in series. Let's see you in next class.